With your permission, once again, please accept our humble Yali Madad and Shukrana, and thank you for giving us time and coming this morning. We understand this is the best time to sleep on Sunday morning, but you have sacrificed your sleep and your time to come over here. In return, we like to present some knowledge which Imams has given to his Jamaat. Our Tariqah is the best Tariqah in the world, and that is only for the one and one reason, and that is because we have a living Imam, a living guide, which no one in this world can say. No religion in this world can say that they have a living Imam and a living guide. Due to that, and that makes us actually the most luckiest people on the planet Earth, because we have the Imam. Having said that, with this Imam, with this blessing, comes the responsibility. What is the responsibility on us, on our shoulder? To understand our Tariqah, to understand Jamaatana, to recognize the Imam, to understand his Farman. So, this particular subject, I will start with a question. And the question is there anything more in our Tariqah than rites and rituals? क्या हमारे तरीके में इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ है कि बस हम अपनी जाकर क्रिया को बजा लें और ख़त्म, फिर घर पे आके हम बैठ जाए और सो जाएं? क्या इससे ज़्यादा हमारे मज़हब में कुछ है? That is the question. I will try to speak in English because some of you guys do not understand Urdu, but I will mix up little bit Urdu, and then if you have a problem understanding a word or here and there, please do ask, and I will go back and forth between Urdu and English. Let's take an example, and let's say there is nothing more than what we are doing today, which is what? Go to Jamaatana, say 2-time dua in evening, do our tasbih, do our nandi, dua, Friday niyaz, chandra chanta, go in the morning Jamaatana. If you are not in Baitul Kal, just do your dua again, do tasbih, niyaz, and come home, and we think we are done with our religion. That is our tariqah in totality. And you don't have to tell me or anybody else. Put your hand on your heart and ask yourself, if that is my religion and that is the religion I am following today, am I following a physical religion, a physical rites and ritual, or am I following a batini, spiritual religion of the living Imam? That is the question to ourselves. Let's take some example. We all believe, as an Ismaili, that when we die, we will become one with the Imam. जब हम मर जाएंगे तो हम फौरन से इमाम के असर में वासल हो जाएंगे. That is our belief. It's a good belief. It's a good blind faith for children, not for adult. ये बात अच्छी थी
जब हमारे माँ बाप हमको बचपन में सिखाते थे. Yeah, it was good talk, good lesson for children, not for adult. So the example is, let's say there is a good moment. He comes to Jamasana morning, evening. He's in Baitul Khal, he does ibadat. He's a really good person, honest and good person. He does a lot of charity, follows Imam's Furman as much as possible, enroll himself in all the majalis, does whatever he can do to be a good human. और वो मर जाता है एक दिन. He just passes away. मुखी साहब gets the news. मैयत हो जाती है. दुआ मांगते हैं मुखी साहब. या मौला फलां फलां Rouhani has come to you. Please forgive his sin. Please give him your didar. Please make him one with you. उसके गुनाह को माफ करना, अपना दीदार देना, उसको असल में वासिल करना. Now, example of another person, not so good person, hardly ever comes to Jamasana, never give the son. Charity, forget it. Good deeds, forget it. कुछ भी नहीं करता है. इस्माइली है, मर जाता है. मुखी साहब receives the news. मुखी साहब दुआ करते हैं, या मौला रूहानी आपके हुजूर में आई है, उसके गुनाह को माफ़ करना, उसको अपना दीदार नसीब करना, उसको असल में वासिल करना. Now tell me with your mind and heart, क्या ये दोनों बराबर बराबर है? क्या ये शख्स जो सब कुछ करता था, he did anything and everything possible to do a good deed and follow Imam's Farman, and this man who did anything and everything not to follow Imam's Farman. But the dua is same, and our understanding is, because he is smiling, wasal mein wasal ho gaya. You think that is true? Does that make logic? But that is our understanding today. क्या हम इसी तरह नहीं सोचते? कभी हम सोचते हैं, कभी हमने इसके ऊपर ध्यान दिया? Have we ever given a second thought? हर आदमी, हर औरत, हर बूढ़ा, हर बच्चा, सबके लिए एक ही दुआ है. दुआ इज जस्ट अ सिफारिश, अ रिकमेंडेशन इंग्लिश में. मुखी साहब की जो दुआ है वो इमाम की हुजूर में रिकमेंडेशन है, खाली एक सिफारिश है कि मौला ये रूहानी आपके हुजूर में आई है, प्लीज हैव मर्सी ऑन हिज सोल, forgive his sin, give him your didar, take him into yourself, make him one with you. That is just a recommendation. आप कहाँ तक जाते हैं वो आपके ऊपर है. With that thought, अब ये बात अगर हम समझ गए हैं, तो हम, let me ask you the same question again. Is there anything more in our tariqah than rites and ritual? क्योंकि rites and ritual तो हर आदमी करता है. हर आदमी rites and ritual करता है. Now, let's take a two of the same kind of Ismaili मोमिन. दो मोमिन जो सब rites and ritual करता है, पूरा जमाखाना में आता है, पूरी कसम डालता है. He does all those, but he never understands any of the farman. He does not understand the dua. He does not understand any of the ginan. And the other one, he works hard. Peace ginan, Imam's farman, understand all the dua and rites and ritual. He works hard.
to make sure that he is doing everything with the understanding. क्या इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? होना चाहिए ना. एक आदमी ने इतनी मेहनत की है. अब दुनिया की मिसाल लें. हमारे खोजे में कन्वीनियंस स्टोर वाले बहुत होते हैं, रेस्टोरेंट वाले बहुत होते हैं. A person who does all the research before he opens the store, before he buys the store, and a person doesn't do any research and just buy the store, किसके चांस ज़्यादा है कामयाब होने में? Who will succeed? जो रिसर्च क्या होगा? He would buy a nice store so he may make money, and the person who has not done anything, he may get lucky, but there is a chance that he will fail. Just like that in our Tariqah, Imam बोलते हैं कि दिन में 2 घंटे, 2 hours in a day, you should think of your religion and you should read the books of the Dais and Peers and Ginans and Farman so you may understand your religion. Okay, now comes the hard question. Okay, माफ़ी के साथ, please forgive me for what I am about to say. In advance, I'm sorry. आज हम दुआ पढ़ते हैं, वो सवाब का काम है कि गुनाह का काम है? मौलाना फरमाया अगर दुआ के मायने नहीं जानते हो तो दुआ नहीं पढ़ो. अगर हम मायने पढ़े बगैर दुआ पढ़ते हैं तो सवाब का काम है कि गुनाह का काम है? तो गुनाह हो गया. तो हम में से कितने दुआ के मायने जानते हैं? एक भी आवाज नहीं आ रही है. कितने मायने जानते हैं दुआ की? 1, मे भी 2, मे भी 3, मे भी 4. मेरे ज्यादा गरीब तो नहीं जानता दुआ के मायने, राइट? तर्जुमा मालूम है. थैंक यू. लुक एट द दुआ बुक. देखें, लुक एट द फरमान. You must know the meaning of the dua. Otherwise, don't recite the dua. इमाम का फरमान है कि अगर हम मानी जाने बगैर दुआ पढ़ते हैं तो ना पढ़े आप. अब दुआ पढ़ना आपके लिए गुनाह हो गया. क्यों भाई, क्यों हो गया दुआ पढ़ना गुनाह? क्योंकि हमने इमाम के फरमान को फॉलो नहीं किया. देखा, आपने दुआ पढ़ना नहीं था, वो फरमान को फॉलो करना था. फरमान को फॉलो करना सवाब है. मौला ने जब बोला कि तुम मानी जानो, तो मानी जानकर, ट्रांसलेशन जानकर नहीं. Someone can argue, maybe Imam was talking about translation. Maybe he forgot and he did not mean it that way. When he said meaning, maybe he was saying translation. Now, let's say for a second, for the sake of argument, okay, he was talking about translation. How would you explain this Farman to a person living in Syria, Iraq, Iran, Afghanistan, where they all understand Arabic? What translation would they be using? They speak Arabic. This is their first language. What translation will they be using? But when Imam says meaning, now we are all equal in that. Doesn't matter you are Gujarati, Kachi, Punjabi, Sindhi, Arabic, Persian, जो भी है. Imam saying know the meaning of the dua and then recite the dua. Then recite the dua. एक और example again, माफी के साथ, not easy. The reason I wanted to talk about this, ताकि हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक धमाका हो. And we should think and go back and do what is Imam is telling us to do. Don't just follow the religion blind faith. वो बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता है. वो बच्चों का कोई गुनाह नहीं है. If they don't know the meaning, it's okay. There's no sin. लेकिन हम एडल्ट हैं अब. We must understand the फरमान and follow the फरमान. दूसरा फरमान,
And this may be even harder than the first one. Imam Sultan Shah, हमारी जान से फिदा हो, in 1945 मिशन कॉन्फ्रेंस दारुस्सलाम के अंदर फरमाते हैं, if you do not want to say Ali Allah, don't recite the dua. If you don't want to say Ali Allah, don't recite the dua. Again, you don't have to tell me or tell anybody else. How many of us believe in Imam being Ali Allah? If not have, I don't see any hands up. Again, what we are doing the same thing what Mullah has told us earlier. Do not do something if you don't understand. हमारा मजहब इंटेलेक्चुअल मजहब है, लॉजिकल मजहब है, एंड हमको अपने मजहब को इंटेलेक्ट से एंड लॉजिक से समझना है, क्योंकि हमारा मजहब इंटेलेक्चुअल है एंड लॉजिकल है. होकस पोकस चाहिए, बहुत मजहब है, होकस पोकस मजहब है. हमारे मजहब में होकस पोकस नहीं है. इट्स प्योर एंड सिंपल, straight path. Follow with your intellect and follow with the logic. एक भी ऐसी चीज जमात खाने में आपको नहीं मिलेंगी, मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, एक भी नहीं, एक भी चीज नहीं कि जिसके पीछे लॉजिक ना हो, जिसके पीछे बातिन व रूहानियत ना हो. अब कुछ भी ले लें. अब तो ये मैं आपको खाली एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपको हैरत हो जाएगी. इवन द शूज कंपनी हैज द लॉजिक एंड द स्पिरिचुअलिटी हिडन इन शूज कंपनी में भी, पानी कंपनी में भी, वॉलंटरिज्म में, नांदी में, जमात खाने के स्ट्रक्चर में, हर चीज के अंदर एक लॉजिक और एक हिकमत, the wisdom hidden in it. कोई भी आप जमा से जो भी हमारी क्रिया है, सब चीज के अंदर, हर चीज के अंदर एक बातीन छुपाया गया है. किसके लिए? कि जो अपने इंटेलेक्ट से और लॉजिक से उसकी तरफ देखता है. तो अदरवाइज ब्लाइंड फेथ इज देयर फॉर एवरीबॉडी. मौला का फरमान मुझे याद आता है कि Quran and its tawil is for us. What is written is for us. अरे कुरान के अंदर जो लिखा वो हमारे लिए है. बोला बोलते हैं, what about the rest of the Muslims? What about the rest of the world who reads Quran? बोला पता नहीं, कुरान में जो लिखा हुआ है और कुरान की जो तावील है वो हमारे लिए है. क्या मतलब है? कि उसके अंदर जो गाइडेंस है, जो विजडम है, जो तावील है, जो बातिन है उसका, वो हमारे लिए है. क्यों हमारे लिए भाई? क्योंकि हमारे पास लिविंग इमाम है. सबके पास कुरान है, लेकिन नूर और इमाम किसके पास है? वो हमारे पास है. ये कुरान जो आपके हाथ में पड़ा हुआ है, अगर ये बत्ती बंद कर दो और कहो आप कुरान पढ़ें, तो आप पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे. वो लोग जो कुरान को पकड़ के बैठे हुए हैं, विदाउट द लाइट ऑफ द इमाम, दे मे सी द कुरान बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द कुरान. जैसे वो अंधेरे में पढ़ रहे हैं, जैसे वो ब्लाइंड है, अंधे हैं, पढ़ते हैं कुरान, समझते नहीं है. जी फरमान एक शेयर किया है तो पढ़ना चाहूँगी. इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. You must recite your prayers by understanding its deeper mysteries. The only way to capture the mystery of prayers is to understand each and every word that is recited. The way to God is based on its meaning. Ruhani Raz Farman book, Pune, June 28, 1908. ये सुल्तान शाह का फरमान. पहले हमने फरमान जो कोट किया हाजिर इमाम का फरमान कि आप मीनिंग जाने दुआ की. दुआ की मीनिंग ब्यूटीफुल मीनिंग है.
Once you know the meaning of the dua and then you sit and recite your dua, आपका कभी भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा. क्यों? आप तो वहां पर एकदम इश्क के अंदर आ जाएंगे. यानी यू विल बी इंटॉक्सिकेटेड दुआ के अंदर. इतना यानी कि आपको मजा आता होगा, बिकॉज यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट. मीनिंग ऑफ द दुआ इज सो इम्पोर्टेंट. और इंशाल्लाह कभी मौका हुआ, so maybe in this kind of sitting we will take each part and we will do its meaning. Not the translation you can read on your own at home. यहाँ पर हम उसकी मीनिंग पर तवज्जो देंगे. तो बैक टू आवर सब्जेक्ट. Our rites and ritual has more than what we are doing today. It has a deeper meaning. और अगर हम सिर्फ नाम के इस्माइली है तो वो हमारी मर्जी है. It is up to us. Nobody is going to force you. It's your free will to just go and just give your 2 hour evening, 1 hour in the morning, and then go home and forget about religion. इमाम का फरमान है कि रिलीजन जो है वो जमात आने से शुरू होकर जमात आने पर ख़त्म नहीं हो जाता है. Our tariqah does not start from the door when you enter the Jamaatana and the door when you leave the Jamaatana. That is not our tariqah, that is not our religion. हमारा रिलीजन जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है. किस तरह? अगर हम उसको समझते हैं तो उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ. वरना जो भी चीज़ हम जमातखाने में करते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ सारे काठियावाड़ी बैठे हुए हैं. कोई ऐसा है जो गुजराती नहीं है इधर? मैं आप लोगों को नहीं पहचानता हूँ. गुजराती, हाँ, काठियावाड़ी. ये काठियावाड़ी नहीं है, एक लड़की सिंधी है. लेकिन वो बोलते हैं कि काठियावाड़ी का जहाँ 2 पैसे का फायदा नहीं हो ना, वो उधर बैठे भी नहीं. बोलते हैं ना. हम जमात खाने जाते हैं, हम जमात खाने जाते हैं एज अ बिजनेसमैन. और आई कैन शो यू गिनान. दिस इज नॉट अ जॉब. In the Ginan piece says that do the business of your religion. और इतना पैसा कमा के लाओ कि जो तुम्हारे लिए वर्थ हो. तो वो जरूर किसी काठियावाड़ी से बात कर रहे होगा, तभी इसने ऐसा गिनान लिखा होगा कि काठियावाड़ी कहीं भी ऊपर बैठे नहीं unless he is making couple of pennies or couple of dollars. Why are we wasting our time and money in something that we don't understand? I think we should invest in some time and then invest our time and money when we go to Jamaatana. Take what you're giving, that 2 hour, take a lot of things back. Just don't go and come empty-handed. That's not a good business. Imam is there to give you. We just heard the Ginan. वो तो हीरे जवाहरात लेके बैठा हुआ है देने के लिए. Go and take that. Don't come back empty-handed. And one of the things she always tells me not to say, I'm going to say it one more time. Yeah, you say it. Yeah. कि जब आप डॉलर मुखी साहब को देते हैं और अगर समझते नहीं है तो आपका डॉलर भी किया और मुखी साहब का वक्त भी आपने ज़ाया किया. राइट? नहीं, एक बात जो कहना सही है वो ये है कि हमारे वालिदैन ने हम पर बहुत मेहरबानी की, हमको ब्लाइंड फेथ सिखाया, जिसकी वजह से हम जमात खाने की अहमियत को समझते हैं, जमात खाने जाते हैं, क्रिया करते हैं. लेकिन अब हम बच्चे नहीं हैं. जो अब बात करने का जो मकसद है वो ये है कि एक बच्चा जो है माँ के दूध को पी के अपने जिस्म को बनाता है, लेकिन वो बच्चा अगर साल का हो जाए और माँ उसको सिर्फ दूध पिलाए तो बच्चा कमज़ोर लागिर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा. उसको खाने की ज़रूरत है. आज हम अपनी इस उम्र में पहुँच गए, खा पी के हट्टे कट्टे जिस्म, घर, दुनिया खूब बना ली. मज़हब में हम वो भी बच्चे के बच्चे हैं. तो ये बात अकल कैसे मानेगी? तो अकल के लिहाज से अगर हम इस बात को देखते हैं, देन ही बिकम्स राइट कि हम जो कर रहे हैं यहाँ जमात खाने में, हम बहुत नादानी से अपना वक्त, जमात के मेम्बरान्स का वक्त सब ज़ाया कर रहे हैं.
जो भी हम कर रहे हैं जमात खाने में सब ज़ाया कर रहे हैं, और हम अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि हम जमात खाने जाते हैं, मजलिसों में जाते हैं, और हम तो बड़े क्या कहना चाहिए, मोमिन हैं। तो ये हमारी खाम ख्याली है, क्योंकि इमाम ही का फरमान है। इमाम फरमाते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को मज़हब की तालीम नहीं देंगे तो जिस्मानी दीन, फिजिकल रिलीजन उनके दिल में बैठ जाएगा। इमाम बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर आज हम अपने आप को ही देखते हैं तो पता है हम क्या कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग आवर रिलीजन फिजिकली। सिर्फ जिस्म को हम ले जाते हैं, पैसा देते हैं, कुछ पाते हैं नहीं पाते हैं, चले आते हैं। तो फिजिकल रिलीजन इज नॉट इट एक्चुअली। इमाम हैज सेड दैट आवर रिलीजन इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट। जब तक हम अक्ल से तमाम चीज़ों को नहीं समझेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, वक्त नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम में और जानवर में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और हमें कहा जाएगा जानवर नुमा इंसान। हम जानवर तो नहीं है ना, हम इंसान है। इंसान की जो अशरफुल मखलूक़ात इंसान को कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि हमारे पास अकल है। इमाम ने फरमाया कि मंसूर अक्लमंद था जो हमारे रास्ते पर चला। उसके लिए जन्नत मौजूद थी, लेकिन वो कहता था जन्नत में जाके क्या करूं, जब तक मग्ज़ को नहीं चखूंगा तब तक आगे बढ़ूंगा। इमाम फरमाते हैं कि मंसूर की जैसी अकल हम तमाम में होनी चाहिए, यानी आगे बढ़ने का जज्बा। सिर्फ जो हमारे माँ बाप ने सिखाया जमात खाने के क्रिया को पालना, अगर हम उसी तक रहे हैं तो आज तो ऐसा लगता है इनकी बातें सुन के कि हम तो गुनाह कर रहे हैं। अगर दुआ के माना नहीं जानते हैं तो हम दुआ समझते हैं हम सवाब कर रहे हैं, बट हम गुनाह कर रहे हैं। तो ये कितनी अजीब व गरीब बातें हैं। दिल में जो है वो अजीब अजीब सी महसूसात होते हैं कि या मौला मेरी मदद फरमा कि मैं जो है उस इल्म में कुछ आगे बढ़ूं, ताकि मेरी अकल खुले, मुझे समझ तो आए मैं क्या कर रही हूँ, वरना तो हम सब वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये फरमान की जो हम बात कर रहे थे 1945 तारिक़ मिशन कॉन्फ्रेंस, दिस इज द फरमान वेयर इमाम इज सेइंग that if you do not want to say Ali Allah, then don't say the dua. Remember, हम जो भी बोलेंगे वो रेफरेंस के साथ फरमान के अंदर इनाम से बात करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताएंगे यहाँ पर। और जिनको ये रेफरेंस चाहिए आई कैन ऑलवेज शेयर विद देम, ठीक है ना। ये मिशन कॉन्फ्रेंस 1945 में इमाम सुल्तान बादशाह की बहुत लंबी स्पीच है। इमाम फरमाते हैं, अल्फाज सुनिएगा, द फर्स्ट रिग्रेटेबल थिंग अबाउट ऑल मिशनरीज and religious activities is that I am sorry to say. Imam says, I am sorry to say, gentlemen, a person like Dr. Ivanov of Russia knows more about the Ismaili religion and its meaning than most of our Ismailis put together. Many of our leading gentlemen. यहाँ पर एक सेकंड ठहरे हैं. I want to draw a picture for you. 1945 मिशन कॉन्फ्रेंस, ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस जहाँ से हमारी REC का आगाज़ हुआ है, हमारी फॉर्मल नाइडी स्कूल का जो आगाज़ हुआ है उसकी बात हो रही है कि मौला ने फरमाया कि हमें अपने तरीके की तालीमात फॉर्मली देनी है। हम करिकुलम बनाएंगे, नया स्कूल बनाएंगे, REC सेंटर्स बनाएंगे और उसके अंदर करिकुलम होगा। उसकी कॉन्फ्रेंस में मौला ने तमाम अलवाइज़ों को जो ज़माने में थे, जिसमें अबूली मिशनरी जैसे बड़े बड़े मिशनरी भी थे, एंड ऑल द स्कॉलर, इस्माइली स्कॉलर्स, एंड एवानो जिसने पीर पिंदर जवाब मर्दी का ट्रांसलेशन किया है। ही इज़ अ रशियन गाय बट ही नोज एवरीथिंग अबाउट इस्माइली तरीका। ही वॉज फॉलोअर ऑफ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह। He was present, and Imam is saying, the gentleman, I'm sorry to say, this one gentleman, Ivano, knows about our tariqah more than all of you combined. मेरे जैसे कोई बेकार लोग तो वहाँ नहीं बैठे थे, बड़े बड़े अलवाज़ और बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए थे, और मौला ये फरमान कर रहे हैं। जी सॉरी, फिर दोबारा से पढ़ लें। दोबारा The first regrettable thing about all missionaries and religious activities is that, I'm sorry to say, gentlemen, a person like Dr. Ivanov of Russia knows more about the Ismailia religion and its meaning than most of our bhagats
put together, and many of our leading gentlemen. Again, a man like Mr. Fatsi, a Bohra gentleman of Islamic Research Association, knows more about the Ismaili religion than most of the people of his faith, this faith, Ismaili faith. फिर इमाम कहते हैं नंबर 2, इमाम अलग अलग बातों की emphasize कर रहे हैं. कहते हैं कि in 1905 Juma Bhagat, one of our great missionaries who rendered a great service to me and other very pious Ismailis, came to me. That is exactly 40 years ago, saying that in dua the word which refers to fish should be withdrawn. I said to him, Mr. Jumma, did you intend to drop one of the foundations of the faith? And I said to them that when there was nothing but fish on earth, God stood as witness. And then they must have no doubt to that kind of witness from above. And of course, he understood the matter and dropped it. Then when last in Bombay 8 years ago, many of our people came to me and requested me to add just one word in dua, and then they said, everything was alright. I said, what is that one word? They said, instead of Ali Allah, say Aliyun Wali Allah. So I said, you better drop the whole dua if you want to alter that word. You are ignorant. It is your ignorance and not that Ali Allah is wrong. आपने देखा कि कितना मौला ने emphasize किया कि ये तुम्हारी जहालत है. It is your ignorance that you are asking me to change the word from Ali Allah to Ali Waliullah. What is the meaning change? Do you understand meaning क्या है? नहीं. अली अल्लाह का मतलब है कि अली अल्लाह है. अली वली अल्लाह का मतलब है कि अली is from Allah. There is a difference in the translation or the meaning of it. तो मौला फरमाते हैं अगर तुमको ये करना है ऐसा करो तुम पूरी दुआई ड्रॉप कर दो. And Sultan Mahmud strictly did not change that. जी. तो यहाँ पर इसको रोकते हैं. So then we can open floor for questioning. I'm sure we have a lot of questions now. You want to share something? Just I'm wondering if that's the case, at what point did it get changed to Aliyullah? Because it's no longer Aliyullah, now it's Aliyullah. And I know there were some, I don't know the details, but there was something about that either a compromise was drawn or something happened where at some point it changed to saying Aliyullah, which is not exactly the same meaning as Aliyullah, so that's the question.